Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about first why do we need the environmental education. हमें क्यों चाहिए हम environmental education आपको impart करेंगे irrespective of the factor whether you are a BA student, BSc student or any student from other different stream, right? This should be clear in first place. All of you know we humans are inhabiting two worlds. One is your natural world, right? दैट मीन्स जो हम लोग हैं वी ह्यूमंस हम दो वर्ल्ड्स वी आर लिविंग टू वर्ल्ड साइमल्टेनियसली। एक कौन सा वर्ल्ड है? वन इज़ योर वर्ल्ड जो कौन बनाता है आपके प्लांट्स है, एनिमल्स है, आपका सॉइल है, दिस इज़ योर नेचुरल वर्ल्ड। दूसरा जो है वो आपको क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशंस जो आपके आर्टिफैक्ट्स है जिसमें आएंगे जो ह्यूमंस डेवलप कर रहे हैं। Artifacts usually your different things like weapons, your jewelry, your clothing, different things जो humans develop कर रहे हैं। कैसे develop कर रहे हैं? By utilizing resources from your natural world. This is very simple thing to understand, yes. So that means जो दोनों worlds है वो दोनों हमारे लिए क्या है? Essential है। So after here there is no problem. अब problem कहाँ पे आ रहा है? Where is the challenge? To integrate these are enduring very tensions. How? हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम सोशल इंस्टीट्यूशंस को मोर एंड मोर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। बाय हाउ? बाय यूटिलाइजिंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। बट वेयर इज द चैलेंज? द चैलेंजेस हमें इस्तेमाल करना है। वी आर सपोज टू यूज द resources. There should be more and more development, but without causing any adverse impact to your environment. We are supposed to go for the development. There is no chance without that. फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? मगर हमें तो डेवलपमेंट करना है but without any adverse impact to your environment, as both worlds are very important to you. And this is very easily possible. हम resources हमारा nature provide कर रहा है and we are going for the development. But this is a challenge here. This is a challenge. हमें क्या करना है? हमें तो use करना है but without or though there will be some negative impacts, but we have to go for very less negative impacts to your environment. So we have to go for the development. We are supposed to use the resources without any adverse impact to your this natural world. Yani, for example, we are going for the different economic developments, right? Like हमें करना है कि हमें डैम कंस्ट्रक्ट करना है, किस लिए करना है? For electricity generation के लिए करना है। somewhere we go for the road construction, ठीक है। उसके लिए हमें वास्ट लैंड जो हमें उनके बीच में उनको फ्रेगमेंट करना पड़ता है एंड वी कंस्ट्रक्ट द रोड्स एंड वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जहाँ हम गैजेट्स टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो आपके एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट कर रहा है बाय रिलीजिंग डिफरेंट टॉक्सिन्स टू योर एनवायरनमेंट, ऑल ऑफ विच रिजल्ट इन द वेरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. So certainly we are doing the development but at cost of your nature, mostly the things we are currently debating about, right? Sorry. So जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी हम तो स्टॉप नहीं कर सकते हैं, ये तो हमें कंटिन्यू करना है बट विदाउट डिग्रेडिंग योर एनवायरनमेंट. सो हाउ दैट इज़ पॉसिबल? हम एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे एंड सेम टाइम वी वांट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो हमें एक ऐसी किस्म की डेवलपमेंट करनी है जहाँ पे क्या होगा, देयर आपका एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो जाएगा, देयर विल बी लेस एडवर्स इम्पैक्ट टू योर एनवायरनमेंट एंड दैट डेवलपमेंट इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो वेयर इज द फोकस? The focus is what is at the center of this environmental education, right? What is at the center? That is the development. कौन सी development है? That is the sustainable development. Now first I will make you understand what the sustainable development is. Sustainable development वो development है जो आपको ensure करती है आज आपकी हर एक need, हर एक demand जुडिशियसली आपकी जो डिमांड है, आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो फुलफिल हो रहा है एंड एट द सेम टाइम वी आर नॉट कंप्रोमाइजिंग द डिमांड, द नीड ऑफ योर फ्यूचर जनरेशंस. उस डेवलपमेंट को हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और
द डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, इकॉनमी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वी आर डेवलपिंग द डिफरेंट टेक्नोलॉजी, वी आर डेवलपिंग दीज डैम्स, हम ये सब कर रहे हैं मगर विदाउट काजिंग एनी एडवर्स इम्पैक्ट टू योर एनवायरनमेंट। उस एनवायरनमेंट को बोलते हैं, उस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जहाँ आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, जुडिशियसली कर रहे हैं, कहीं आप डैम बना रहे हैं, आप पहले देख रहे हैं क्या इससे मुझे कोई एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है, उसके बाद ही आप उसको क्लियरेंस देते हैं, उसी के बाद वो प्रोजेक्ट डैम का स्टार्ट होता है। पहले आप बाज़ाब्ता चेक करते हैं इससे कोई आपका एनवायरनमेंट पोल्यूट तो नहीं हो रहा है, डैमेज तो नहीं हो रहा है, ओनली देन यू एग्जीक्यूट दैट वेरी प्रोजेक्ट। उस डेवलपमेंट को बोलेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ हमारा एनवायरनमेंट एडवर्सली इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, नीदर यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ योर फ्यूचर जनरेशन दैट दे विल मीट देयर ओन नीड्स। दैट मीन्स हियर क्या आता है, व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज टू नोट दैट जो ग्रीड पार्ट है वी हैव टू कम्प्लीटली इग्नोर दैट। हमें ग्रीडी नहीं बनना है, लाइक चलो जी भाई मेरा नीड जो है वो फुलफिल हो गया है, आई एम यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, आई शुड बी वेरी लेस कंसर्न अबाउट द फ्यूचर जनरेशंस। ऐसा नहीं है। बट सो व्हाट इज द सेंटर ऑफ योर एनवायरमेंटल एजुकेशन, यू हैव टू गो फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वन मोर थिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे आपको समझ आएगा, और एल्स आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा, नो मैम वी हैव इनफ ऑफ द रिसोर्सेज, यस राइट, हमें तो रिसोर्सेज बहुत सारे, बट देयर आर सम रिसोर्सेज दैट वोंट बी रिप्लेनिश्ड इन आवर लाइफ स्पैन्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फॉसिल फ्यूल्स है, योर कोल, पेट्रोलियम, ऑल ऑफ यू नो सिंस योर स्कूल टाइम्स, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस थिंग। जो फॉसिल फ्यूल्स है आप तब से पढ़ रहे हैं इस बारे में, दैट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, वो उसको बनने में लगते हैं। नाउ अगर हम एक फास्टर रेट से उसको हम कंप्लीट यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग एट वेरी फास्टर रेट्स, ठीक है, सो देयर विल बी अ टाइम, एक जनरेशन्स आएगी उनको एक्सेस नहीं होगा कुछ रिसोर्सेज का, राइट, सो दैट मीन्स यू आर नॉट सस्टेनेबल, ठीक है। आप वो फ्यूल्स कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं बट नॉट इन अ सस्टेनेबल वे, सो यू आर बिकम वेरी ग्रीडी हियर, राइट। एंड अनदर एग्जाम्पल्स, इवन आपको जो कोई वाटर दिख रहा है, एक बड़ी वाटर बॉडी दिख रही है, वाटर, योर वाटर रिसोर्सेज, कहीं रिवर है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप उसको पोल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं, आप बहुत उसको एट वेरी हाई एक्सेलरेट रेट पे क्या कर रहे हैं, पोल्यूटेंट्स को वहाँ पे डंप कर रहे हैं। सो देयर विल बी अ टाइम जो उसका पोल्यूशन रेट इतना हाई हो जाएगा, उस इन आवर लेटर क्लासेस वी विल डिस्कस अबाउट, देयर इज अ वन इम्पॉर्टेंट टर्म, उसको बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन, दैट इज़ उतने पोल्यूटेंट्स आप उसमें ऐड करेंगे, अल्टीमेटली एक स्टेज आएगा उस लेक का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। सो योर फ्यूचर जनरेशन्स वोंट हैव एक्सेस ऑफ दैट वेरी दिस रिवर और जो भी वाटर बॉडी होगा वहाँ पे, वो तो उसको फाइनली नहीं मिलेगा, फाइनली वहाँ से सेडिमेंट्स ऊपर लेवल तक सारा फिल हो जाएगा, ठीक है, मार्श, तो फाइनली दैट विल बी कन्वर्टेड सम लेटर सम बैरन लैंड एज वेल, ठीक है। सो तो उस फ्यूचर जनरेशन को एक्सेस नहीं मिला, ठीक है। सो दैट मीन्स हमें बोथ वर्ल्ड से इम्पॉर्टेंट है, आपको सोशल वर्ल्ड चाहिए, यस मुझे डेवलपमेंट करना है, मगर कैसे करना है, विदाउट डिग्रेडिंग योर natural world. Besides this, these issues, like we are supposed to integrate, we are supposed to integrate the two worlds successfully. Besides, there are other these global issues हमें है, yes, क्या हमें है, there are very global challenges we are facing, like the climate change. We are oftenly debating, you must be knowing as well about this very environmental global challenges जो हमें है, like global warming है, melting of जो ice caps later हो रहा है, right, different pandemics we are facing, right. So there are ग्लोबली भी हमें बहुत डिफरेंट चैलेंजेस है विच यू आर सपोज टू एड्रेस लेटर आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स, सर्टनली, बट ठीक है, येस देयर आर सो मेनी चैलेंजेस आर देयर, बट हाउ यू कैन हेल्प इन एड्रेसिंग दीज इशूज नाउ, गुड, बिकॉज देखो इन द बिगनिंग वी सेड व्हाट इज़ द एम, क्यों आपको चाहिए, आप पढ़ेंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन, यस, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ लिया, आई वांट टू नो दिस अबाउट द वेरी रिएक्शंस, मुझे मैंने डायनेमिक्स पढ़ लिया, यस आई वांट टू नो अबाउट द एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स है, फिजिक्स है, मुझे बहुत आई वांट टू नो डिफरेंट जो भी हमें है रिलेटेड, जो भी मैटर है रिलेटेड टू योर फिजिक्स है, कॉमर्स है, लिटरेचर है, यस द एम्स आर डिफरेंट, यस, बट वाई बीइंग डिफरेंट फ्रॉम ए डिफरेंट स्ट्रीम मुझे क्यों है,
because humans are at the center, you are at the center, ठीक है, you have a major role to play, क्योंकि we are the humans जो क्या कर रहे हैं, जो आपके environment को degrade कर रहे हैं. So that's why the question is there, irrespective of the fact आप किस stream से है. So being a human first, being a real human first, right, you have to go for this very environmental education. क्यों? क्योंकि एवरी ह्यूमन प्लेज अ रोल इन द एनवायरनमेंट, वेदर आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप या आप इसको डिग्रेड कर रहे हैं. इट इज मोस्टली द हु किसका मेजर कंट्रीब्यूशन है, हम ह्यूमंस का. सॉरी टू से हियर द सो कॉल्ड ह्यूमंस, राइट, जो अपने इथिक्स को ग्रेजुअली हम वी आर डिग्रेड ही कर रहे हैं, लो ही कर रहे हैं, हाँ, रिगार्डिंग अवर एनवायरनमेंट. But I have very much expectations from you new generations, right? So that is why it is important to impart environmental education to every person, to every people. Why? क्योंकि जो humans है आप ही को रोल प्ले करना है, आप ही रोल प्ले कर रहे हैं. So without that is the actual aim behind, क्योंकि हम humans को ही हम ही इसको manipulate कर रहे हैं. We are manipulating the different things, ठीक है, whether positively whether negatively. So you are at the center this of whether problem है या whether कोई improvement हो रहा है. That is the aim. हम इसको आपको environmental education impart कर रहे हैं. You are certainly inshallah you are going to improve your environment. Why? So it will be only after once we will impart environmental education to you, you will understand the following. These 3 questions: how your world works, what you are doing to it, what you can do to protect and improve it. Yani it's only after getting the environmental education you will get an understanding about your environment, how your environment is functioning. Besides, what you are doing to your environment, क्या आप environment को कैसे impact करें, what you are doing, ठीक है, आप क्या इसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्या इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसकी कंडीशंस इंप्रूव कर रहे हैं, और यू आर डिग्रेडिंग इट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल कम टू नो, जिसका आपको आंसर मिलेगा आफ्टर गेटिंग द एनवायरमेंटल एजुकेशन, इज हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर एनवायरमेंट. आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने एनवायरमेंट को, इधर हाउ यू कैन इम्प्रूव. These are all 3 questions जिनका आपको आंसर मिलेगा from your environmental education. And after getting this environmental education, the ultimate aim is you will develop the environmental ethics. आप में क्या डेवलप हो जाएंगे, environmental ethics. That means you will develop a positive concern towards your environment. एक आप में positive attitude आएगा, आप पे एक these environmental, you will start valuing your जो भी आपके environmental components है आप उनको value करेंगे. That means you will stop thinking that only humans are at the supreme, only man is at the supreme. यानी you will start giving this importance as well that हर एक ये का species जो हर एक species को क्या है, they have a right to live, ठीक है. We are nobody to destroy their जो भी उनके habitats है, ठीक है, या किसी species को बिल्कुल ख़त्म ही करेंगे, हम उसको overuse करेंगे, we don't have any right. They also have a right to live in this very environment, in this very nature, on this very earth. So finally, after all this environmental education, आप एक attitude आएगा, you will start living a sustainable life. This is the aim. Certainly this is a later this all is your choice, and I know all of you will certainly will go towards what a positive choice, ठीक है. all of you will what is the aim, why you go for the education of the different subjects, क्यों आप ले रहे हैं. the ultimate aim is मुझे ये knowledge आना चाहिए, इस subject का यही aim है, आप ethics develop हो, and certainly surely and I'm sure you all will develop these ethics. Is it so? And so finally आप में एक attitude आएगा, you will start a living जो कि sustainable होगा. Here I will again make you understand what the sustainable living is. For example, you are studying during a day. दिन में क्या है, आप अपने study room में study कर रहे हैं, and there is enough of the sunlight and you are coming to your room. So at that very time unnecessary आप table आप use नहीं करेंगे, आप lights को on नहीं रखेंगे. You will keep the lights off. आपको दिन में आपने किसका इस्तेमाल किया, आपको सनलाइट आ रही है, तब आपने अननेसेसरी लाइट को ऑन
नहीं रखा, आपने उठकर स्विच ऑफ किया, दैट इज़ द सस्टेनेबल वे, दैट इज़ द सस्टेनेबल दिस एक्शन, दैट इज़ द सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग. नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल होपफुली व्हेन वी ब्रश आवर टीथ्स, हम क्या करते हैं, हम नल का खुला छोड़ देते हैं. सो नाउ यू विल बिकम वेरी कॉन्शियस, नो दिस इज़ नॉट गुड, आई एम डूइंग एट कॉस्ट ऑफ व्हाट, मैं ओवर यूज़ कर रहा हूँ, एट वेयर मैं किसका कर रहा हूँ, आई एम ओवर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज विदाउट गिविंग एनी कॉन्सेंट्रेशन अबाउट द फ्यूचर generations, right? तो उस टाइम क्या कर रहे हैं, you will certainly आप नल का बिल्कुल बंद करेंगे during your when you are brushing your teeth, आपने नल का बंद किया, that is a sustainable gesture, so that means you are sustainably living. And इंस्टेड आप चार फ्रेंड्स हैं, आप कहीं एक लोकेलिटी में रह रहे हैं, एंड एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गो टू योर कॉलेज आप अपनी डिफरेंट दीज कार्स निकालते हैं और कार्स में क्या कर रहे हैं, कॉलेज पहुंच रहे. आप देखो जो चार कार्स है, ठीक है, जिनमें आप कॉलेज आ रहे हैं, उनमें कितना फ्यूल कंजप्शन हो रहा है और उसके बाद उसमें कितनी पोल्यूटेंट जनरेट हो रहे हैं. चार का ऑब्वियसली एक से ज़्यादा इम्पैक्ट होगा. इंस्टेड यू विल यूज़ वन कॉमन कैब, ठीक है, आप एक कॉमन कैब जाएंगे, उसमें ये चारों कैंडिडेट्स क्या है, अपने कॉलेज जाएंगे. सो सर्टेनली यू लोअर यूर impact on the environment, the negative impact on your environment. Though certainly चार से ज़्यादा एक का impact कम होगा. That means a mass transport system. Obviously that is a public transport, ठीक है, public transport जो यहाँ पे available है या होगा, to avoid ताकि individual impacts हमें कम हो जाए. That is also the sustainable way of living. These are just some examples. अगर आप ये सब follow कर रहे हैं, so certainly you are living a sustainable way. And ultimately क्या होगा, once you become the sustainable, you lower your ecological footprint. Now what is this ecological footprint? Ecological footprint is आप कितने, how much resources you are using to sustain your life, to sustain your living standard, जो भी एक living style है, lifestyle है, आप कितने उसको सस्टेन करने के लिए एक पर्सन कितने यूज़ कर रहा है रिसोर्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द नेचर, एज वेल एज आप कितने वेस्ट जनरेट कर रहे हैं जो आप अल्टीमेटली डंप कर रहे हैं आपके एनवायरनमेंट में. यानी आप कितना नेचर को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो आप रिसोर्स कितने यूज़ कर रहे हैं और वेस्ट्स कितने आप रिलीज कर रहे हैं आपके एनवायरनमेंट में. दैट इज़ योर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, हाउ मच resources you are using. So once you become sustainable, certainly you will lower your ecological footprint. That is the ultimate aim behind this environmental studies, behind this environmental education, behind the environmental science as well, right? And kindly note this this topic here, this term here, ecological footprint. In some one separate class we will have a detailed discussion about the ecological footprint. So what is the ultimate aim? Ultimate aim is आप में एक में you will develop environmental ethics, उससे आपका एक concern develop होगा towards your environment, and you will start a sustainable way of living, and ultimately you are at the center, though not the only supreme species, you are at the center. You can play you are in fact playing a major role in what in impacting, or in whether you are protecting, whether you are this mitigating जो भी environmental issues है, you have a major role to play there, so that all of you will play a role in protecting your environment, ताकि जो भी global challenges है जो भी वो हमें address हो जाएंगे. completely तो rid of easily नहीं होगा, but at least we can mitigate. That means at least we can lower the impact. So here is a one very some of you must be knowing this. This is a one very beautiful quote, that जो earth है, that certainly provides the enough to satisfy every man's need, but not every man's greed, which you should now remember by your heart. Is it so? Is it so? That means look, earth already that provides enough. There are endless things, there are so many things, but what we should do, हमें overuse, overutilize नहीं करना है. We have to take into consideration, ताकि first छोड़ो future generation को, ताकि हमें ही in our lifetime हमें ही more and more pandemic adverse impacts face ना करना पड़े, हमें ही witness ना करना पड़े. So this is all about why we need environmental education.